Biology. Today we are going to discuss about Mendel's laws of inheritance, Mendel's experimental procedure, Mendel's observations and Mendel's inferences about the inheritance of characters. So, Mendel's experimental procedure. Mendel conducted artificial cross-pollination by emasculations. Emasculation means removal of anther on several true breeding lines. केते गुड़िए ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट रे मेंडेल कौन करथिले आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करथिले. तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन कौन? ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स रिफर्स टू वन दैट हैव अंडरगॉन कंटीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. जो प्लांट रे कंटीन्यूअसली जनरेशन टू जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन होची ताको कहै होची ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशंस. A true breeding line refers to one that have undergone continuous self-pollination. Self-pollination and cross-pollinations we have already discussed in the video of sexual reproduction in flowering plant. You can watch that video. So, Mendel selected 14 true breeding pea plants with characters of contrasting traits. Mendel 14टी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को सिलेक्ट कले विथ कैरेक्टर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट. कैरेक्टर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट तो आम जाने तो ट्रांसफर और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर नोन एज हेरिडिटी. आम जाने कैरेक्टर और ट्रेट कैरेक्टर अथवा ट्रेट रो ट्रांसफर वन जनरेशन टू वन जनरेशन को आम कहूचे हेरिडिटी कहूचे. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स एठी हम पढ़ले मेंडेल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स विथ कैरेक्टर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स? Traits is a state of characters which is a distinct variation of phenotypic characters. Character होची गुण. Character is a feature by which we can recognize, we can identify an organism. We can identify a plant or an animal. Okay. Character होची गोटे गुण. Character अर्थला गुण जहा द्वारा आमे जीव को चिन्हि पाइबा तार फिजिकल अपीयरेंस देखि. तो ट्रेट कोन? ट्रेट होची इज ए वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स. तो कैरेक्टर गोटे अंश होला ट्रेट. इट इज ए स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इज ए डिस्टिंक्ट वेरिएशन ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स. अथवा कैरेक्टर धरिनियो हाइट ऑफ प्लांट. आम जानी हाइट है गोटे कौन कैरेक्टर एंड इट हैज टू कंट्रास्टिंग ट्रेट. ट्रेट कौन? गोटे हूँ डेंगा गोटे हूँ गेड़ा. Tallness and dwarfness. Tall is one trait and dwarf is another trait. Okay. बुझी पारलो कौन ट्रेट? ट्रेट इज ए स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इज ए डिस्टिंक्ट वेरिएशन ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स. हाइट गोटे कैरेक्टर हेले तुमर टॉल हैला गोटे ट्रेट एंड ड्वार्फ हैला आ गोटे ट्रेट. ओके. सो लेट्स सी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेंडेल. Mendel selected 7 contrasting characters or 7 traits for his observation or for his experiment. Mendel selected first height of stem, color of flower, position of flower, shape of seeds, color of seeds and shape of pod and color of pod. Mendel had selected 7 characters with contrasting traits. Contrasting means alternative. Okay. First, Mendel crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene or inheritance of single characters. Okay, that is height, tall and dwarf. Tall and dwarf. So, tall and dwarf are two contrasting characters. Contrasting character.
that is height. Height होची गोटे character तार दीटा trait हिला tall and dwarf. Contrasting means alternative. Okay. The alternative character of tall is dwarf. So Mendel had selected 7 different characters of contrasting trait. Then what Mendel first did? Mendel first crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of a single gene or character, that is height. Height होची गोटे character. सेटा केमिति inherited होची बा transfer होची from one generation to another, from parent to progeny. First Mendel observed it. The seed produced by these process were grown to develop F1 generations. Mendel first selected one tall plant and one dwarf pea plant and crossed them. After crossing, he got the F1 generation. The seed were produced and these process were grown to develop F1 progeny. तो एटी क्रॉसिंग कला फलरे जो हाइब्रिडाइजेशन परे जो मंजी बा सीड प्रोड्यूस होला ताकू नै कि मेंडेल कोन कले आउ थरे ग्रो कले. तो सेही सीड को ग्रो कला परे जो प्रथम प्लांट आसिला ताकू कहले F1 generation. F1 generation also known as first filial generation. First filial generation. First filial generation or also F1 progeny. F1 progeny. And he observed that all plants are tall in F1 generations. Then on selfing the F1 generation, Mendel observed that out of all pea plant, 3/4 of the plants are tall and 1/4 are dwarf. It means 3 plants are tall and 1 plant is dwarf out of 4 plants. First Mendel कौन करले गोटे डेंगा मटर गछ नेले एवं गोटे छोट बा गेडा मटर गछ नेले से ताकू कौन करले पॉलिनेशन करेले बा हाइब्रिडाइजेशन करेले. तो हाइब्रिडाइजेशन परे जो प्रथम जेनेरेशन सृष्टि होला ताकू कहले से F1 जेनेरेशन बा फर्स्ट फिलियल जेनेरेशन. तो से फर्स्ट फिलियल जेनेरेशन को से कौन करले सेल्फिंग करेले बा सेल्फ पॉलिनेशन करेले. After self pollination, the plants are produced known as F2 generations. These are F2 generations. In F2 generations, Mendel got 3/4 of the plants are tall and 1 plant is dwarf. Mendel देखिले जे अधिकांश प्लांट टॉल होची एवं कोन ता भितरु अल्प बा गोटे 4टा प्लांट रो गोटे प्लांट मात्र ड्वार्फ होची. So Mendel observed that some characters are transferred from parent to their progeny. Okay. Then what are Mendel's inferences? Mendel कोन ऑब्जर्व करले कोन कंक्लूजन आसला. He proposed that some factors are inherited from parent to progeny. जेतबे से देखिले when he crossed between tall plants and dwarf plant, he got all tall in F1 generation, and on selfing when he self pollinated between the F1 progenies, he got 3/4 of the plants are tall and 1/4 dwarf. So he concluded that there are some factors which are inherited from parent to progeny. किछि फैक्टर अछि जोडा कि पेरेंट मानको पाखरु प्रोजेनी मानको पाखु जाउची in the form of gamete.
Okay. The factor nowadays known as gene. Mendel जहाँ factor बोली कहूथिले आमे ताको कहूचे कोन gene कहूचे. तो gene is the unit of inheritance. तो जो गुण गुड़ी को inheritance होची बा स्थानांतरित होची parent थारु offspring को सेटा कहा द्वारा हेउची ना gene द्वारा हेउची. So gene is the unit of inheritance. Okay, and the term gene was coined by William Johansen. Okay, Mendel was unknown about the term gene. To explain clearly Mendel's laws of inheritance, William Johansen coined the term gene, and he also made distinction between the phenotype and genotype. Who? William Johansen. William Johansen also made a distinction between the phenotype and genotype. So, Mendel's factor nowadays known as gene. So, dear students, this is all about Mendel's experimental procedure, observation and interference. Next class, we will discuss about some important terms in genetics. Till then, keep watching and keep learning. Don't forget to subscribe to the channel. Please watch the video till the end. Thank you.